Assalamualaikum student and welcome to another session of environmental engineering. So let's have a review of a last lecture. So in the last lecture we have discussed the process of disinfection. We discussed the different types of chlorination, the different forms of chlorine which is available in the form, and the form of chlorine which is more active or the active reagent of disinfection. We also discussed the break point chlorination concept, and then we have performed some numericals in which we have calculated the chlorine dose required for the disinfection process for different types of the water. So in today's lecture we will going to discuss about the wastewater characteristics, treatment objectives, and the wastewater treatment process, in which we will discuss the different components of the wastewater treatment plant. So in today's lecture we will go through the three main components, that is the screen, grid chamber, and segmentation. So before discussing the wastewater characteristics and treatment objectives, uh, you should know that it is basically the wastewater engineering or the wastewater treatment. It is the branch of environmental engineering in which the basic principle of science and engineering are applied to the problems of water pollution control. So, as an overview, this wastewater engineering includes the wastewater treatment, sludge disposal and reuse, wastewater reclamation and reuse, effluent disposal and role of engineers. Every community produces both solids and liquid waste. The liquid waste is known as the wastewater, and it is defined as a liquid waste collected in a sewer system and conveyed to the treatment plant for processing before it is discharged in a natural receiving streams. In view of their sources of generation, it may be defined as a combination of a liquid or water carrying waste removed from residences, institutions, commercial and industrial establishment, together with the groundwater, surface water and storm water may also be presented. So today we will discuss about the wastewater characteristics. ठीक है, wastewater की properties and wastewater characteristics. The importance of wastewater characteristics is that it is very important to understand the nature of the wastewater. ठीक है, आपको वेस्ट वाटर की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है in order to treat that wastewater. Because if you don't understand the nature of the wastewater, you will not in the position to treat the water or suggest the related treatment process to remove that related pollutant from the wastewater. ठीक है, so इसलिए it's very important to understand the nature of the wastewater. So after understanding the nature of the wastewater, you will able to design and operate the various treatment processes and various treatment processes which are involved in the treatment of that particular nature of the wastewater. So, as understanding of the nature of the wastewater is essential in the design and operation of collection, treatment and disposal facility. ठीक है, वेस्ट वाटर को हम जिस तरह हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, क्योंकि हम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को डील कर रहे हैं, सो वी कॉल इट सीवेज. ठीक है, जब हम सीवेज की बात करते हैं तो सीवेज में आपका वेस्ट वाटर आ जाता है. सो अगर हम टिपिकल कंपोजिशन ऑफ सीवेज देखें तो इसमें हमारे पास 99.9% वाटर है और 0.1% इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल्स. ठीक है, अब सीवेज के हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं दैट इट कंटेन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, या इसको आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इट इंक्लूड्स द टेम्परेचर ऑफ द वेस्ट वाटर, द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड इन द वेस्ट वाटर, द कलर ऑफ द वेस्ट वाटर एंड द स्मेल और ऑडर ऑफ द वेस्ट वाटर. Whereas the chemical properties will include the organic chemical, the presence of inorganic chemicals and different types of the gases in the wastewater. Whereas the bacteriological characteristics is considered, it deals with the presence of bacteria, worm, virus and protozoa in the wastewater.
So in this slide, we are going to discuss the characteristics of municipal and industrial wastewater. ठीक है, municipal wastewater जो आपके domestic use से produce होता है, industrial wastewater जो different industries में जहाँ पर हम water को as a raw material use करते हैं. So in the return we get the raw water, we get the wastewater. So let's discuss the few of the characteristics of municipal and industrial wastewater. The first one characteristics of municipal wastewater that its pH is basic because of presence of organic matter, because it contains the water from your washrooms. ठीक है, जबकि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में जो pH होती है दैट इज एसिडिक बिकॉज इन इंडस्ट्रीज देयर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड. ठीक है, हमें नहीं पता कि किस टाइप के केमिकल्स और एसिड्स हमने यूज़ किए हैं इन द इंडस्ट्री. सो जो भी वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से प्रोड्यूस होगा उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि उसमें एसिडिक pH होगी. Second one, heavy metals are not present in municipal wastewater, whereas in industrial wastewater में heavy metals present होंगे क्योंकि you will use different types of the chemicals which may release heavy metals as a byproduct of their reactions. Municipal wastewater will contain a very less quantity of toxic chemicals. Okay, whereas industrial wastewater contains a lot of toxic chemicals which may be present in their wastewater. Fifth one is this wastewater has less adverse effect on environment because it doesn't contain any heavy metal or toxic chemicals, so it just contains the organic content which have less adverse impact on the environment. Whereas if we consider the industrial wastewater, it contains heavy metals and lot of toxic chemicals which have an huge effect on the environment. For municipal wastewater ट्रीटमेंट कॉस्ट इज़ लेस एंड इट इज़ सर्विस. ठीक है, ये इसकी जो ट्रीटमेंट है क्योंकि हमें ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को रिमूव नहीं करना पड़ता, सो इसकी जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट कॉस्ट है दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, बिकॉज इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यू हैव टू इंस्टॉल अ वेरी एडवांस एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस टू रिमूव दोज hazardous and toxic chemicals from the water. So it is very important to know the nature of the water कि आपने किस टाइप के या किस नेचर के वाटर को ट्रीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस या चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस लगाएंगे. बिकॉज इफ यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वाटर you will also don't know the pollutant present in the wastewater. So if you know the nature of the wastewater, you will also know that what type of the pollutant present in the wastewater and what type of the treatment you have to install in your treatment to remove those particular pollutant from the wastewater. So after that we will go through the wastewater treatment systems. So wastewater treatment system is composed of combination of unit operations and unit processes. Unit operation means that remove contaminants by physical forces. Unit processes means to remove the contaminant by biological and chemical reactions. ठीक है, so wastewater treatment system will composed of combination of unit processes means they will remove the contaminants by some physical forces, and unit processes means that it will remove the contaminants by a chemical and biological reactions designed to reduce certain pollutant of wastewater to an acceptable level. Municipal wastewater treatment system consists of three types of the treatment. The first one is the primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Primary treatment involves the removal of solid material from the incoming wastewater. Large debris may be removed by screening or may be reduced in size by grinding devices. Inorganic solids are removed by great chambers, while suspended organic solids are removed by segmentation. Secondary treatment basically involves the biological conversion of dissolved and colloidal organics into biomass that can be subsequently removed by segmentation process. So tertiary treatment is basically involves it involves further removal of suspended solids and the removal of nutrients. Solid removal
may be accomplished by filtration, and phosphorus and nitrogen compounds may be removed by combination of physical, chemical and biological processes. So the basic objectives of the wastewater treatment is to protect uh, the first objective is to protect the women health. So wastewater contains the pathogens which are disease causing microorganisms, heavy metals and other toxic constitutes of wastewater which are very toxic to public health. So it should be removed before discharge in a receiving streams. सेकेंड वन इज़ टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट. हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट, अगर आप अनट्रीटेड वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करेंगे रिसीविंग स्ट्रीम्स में तो आपके जितने भी नेचुरल सिस्टम्स हैं उनकी जो नेचुरल कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डिस्चार्ज द वेस्ट वाटर विदाउट ट्रीटमेंट और विदाउट द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, so when you will discharge the organic matter in the receiving streams, it will start depleting the oxygen of the lakes ऑफ द रिसीविंग स्ट्रीम्स. वो इस तरीके से कि जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होगा बाय द बैक्टीरिया, एंड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मैटर बाय द बैक्टीरिया रिक्वायर्स द ऑक्सीजन. सो व्हेन यू विल डिस्चार्ज दैट वेस्ट इन द वाटर, so it will take the oxygen of the water and start the decomposition of organic matter. So ultimately the oxygen level in the water will be reduced, and all the aquatic animals present in the receiving streams will affected by the limited amount of the oxygen available. Secondly, eutrophication, turbidity, taste and color in water body. Eutrophication is basically the process when you discharge the excessive nutrients in the plant. ठीक है, जब आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, सो इट विल डिफरेंट टाइप्स के आप केमिकल्स यूज़ करते हैं. सो जब ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स यानी प्लांट ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स, हमें पता है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर अ वेरी गुड प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट, व्हेन यू डिस्चार्ज इन द एक्सेसिव क्वांटिटी इन द रिसीविंग स्ट्रीम, सो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. और जो आपकी एल्गी है वो कवर कर देती है टॉप सरफेस ऑफ योर receiving streams. So it will not allow the sunlight to pass through the water. So all the plants which are available at the bottom of the receiving stream will not get the light, and it will not perform the process of photosynthesis. So ultimately it will start dying, and ultimately the जो आपकी लेक की हाइट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जितने भी प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप सनलाइट की ज़रूरत है, दे विल for their survival will get death, or with the passage of a time they will convert it into segments and they will settle down at the bottom of the land. Secondly, the toxic for the aquatic life, as we discussed in the previously, that if you discharge industrial wastewater in the receiving streams, it contains heavy metals and toxic chemicals which are harmful for the living microorganisms in the receiving streams, and it will also cause a soil pollution in case of land disposal. If you dispose the wastewater on the land, on the soil, so it will cause a soil pollution. आपकी जितनी भी soil है वो आपकी affect हो जाएगी due to a industrial process. The third one is for the wastewater reuse application. आपने जो भी वेस्ट वाटर है आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वेस्ट वाटर को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर इरीगेशन पर्पसेस, और यू आर गोइंग टू रीयूज़ दैट वेस्ट वाटर अगेन इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और यू विल यूज़ इट फॉर द ग्राउंड वाटर recharge. Number 4, the purpose of treatment of a sewage treatment is to fulfill the legal requirements. That is, the PAC EPA Environmental Protection Agency have an effluent standards which have a BOD less than 80 milligrams per liter. ठीक है, 80 milligrams per liter से कम आपकी BOD होनी चाहिए. That will be allowed to discharge in the receiving streams. If the BOD is more than the biological oxygen demand is more than the 80 milligrams per liter, that it will affect the oxygen level in the receiving streams. So you should keep the biological oxygen demand less than
less than 80 milligrams per liter. So there are some terminologies which are used in the wastewater treatment. The first one, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि we have unit operations and unit processes. Unit operation involve a physical forces, ठीक है, जिसको हम physical unit operation कहते हैं, whereas a unit processes involve a chemical and biological processes which are used to treat the wastewater. Next is degree and type of the treatment. The degree and the type of the treatment will depend upon the strength of the sewage water, that is the characteristics or the nature of the wastewater, and the method of the wastewater disposal or reuse. ठीक है, मतलब कि आपने वेस्ट वाटर को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है या आपने वेस्ट वाटर को कहाँ पर डिस्चार्ज करना है. You are going to discharge the wastewater after treatment into the receiving stream, so you should have to follow that treatment standards, and the degree of a sewage treatment will depend upon the standards जो आपने मीट करने हैं. और अगर आपने किसी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करने हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रीटमेंट यूनिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द लेवल ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हमारे पास सबसे पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट आता है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी एंड एडवांस ट्रीटमेंट जो हमने लास्ट स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का पर्पस होता है टू रिमूव द लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स एंड ग्रिड. ग्रिड बेसिकली जो भी इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो अपनी केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कंपोजिशन को चेंज नहीं करते, जैसे कि सिल्ट और किले है, तो उसको हम ग्रिड कहते हैं. सो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का हमारा मेन पर्पस होता है कि कोई भी वेस्ट वाटर में लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल बॉटल्स हैं प्लास्टिक की या रैपर्स हैं चिप्स के, उनको आप रिमूव कर सकते हैं. And the grids, ठीक है, which interfere with the mechanical equipment of a subsequent treatment unit. So for preliminary treatment we will use screens which will remove the large floating particles from the water, and then the water will go through the grid chamber where the inorganic particles यानी sand silt के लिए small particles जो हैं वो removed होते हैं in the grid chamber. Primary treatment, the purpose of primary treatment is to remove the suspended organic matter. इसमें हमारे पास BOD रिमूवल 15 से 30% अचीव होती है, whereas suspended particles remove from 30 to 60%. Secondary treatment का purpose है to removal of colloidal and soluble organic matter that remain after primary treatment. ये बेसिकली सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमें BOD को रिमूव करने के लिए यानी ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे पास 75 to 95% जो है वो BOD रिमूव हो जाती है, और हमारे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल है वो 90% अचीव हो जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, लाइक एन एक्टिवेटेड स्लैश प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, एरेटेड लागून, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, and there are many others like a rotatory biological contractor. And so ये processes जो common processes हैं उनको हम discuss करेंगे in our upcoming slides. Tertiary or advanced treatment. The purpose of providing tertiary and advanced treatment is to remove a specific residual substances, trace organic materials, nutrients and other constituents that are not removed at primary and secondary level of the treatment. ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम नॉर्मली फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और कम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज फॉर द टर्शियरी एंड एडवांस्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस. So this is basically a typical flow diagram of different levels of the wastewater treatment. So the raw wastewater will go through a preliminary treatment where the large floating particles will removed by screens and the grids were removed by a grid chamber. Then the water will pass through a primary treatment plant where we will use a primary segmentation tank. The purpose of providing the segmentation tank is to remove the light organic matter which will settle under the force of a gravity. So after removing the particles under the force of a gravity, the water is sent to a secondary treatment, that is a biological treatment where we will do a biological or chemical oxidation of the remaining organic matter. So after
after the biological oxidation, the water is sent to a secondary segmentation tank where the excessive of organic matter following the biological oxidation process will remove. And after the secondary treatment, the advanced and tertiary level of the treatment will come, which is an optional treatment, ठीक है, जहाँ पर हम to improve the effluent quality के लिए हम use करते हैं, ठीक है. And then the last, the from the primary and secondary segmentation tank, the sludge will be collected, and we will treat the sludge before disposing of the sludge in the environment. सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेसेस को दिखाया गया है. पहले हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फिर हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, एंड देन वी हैव एडवांस ट्रीटमेंट. So let's start with the preliminary treatment. So the first operation in the wastewater treatment is to remove the most of the bigger and the longer visible objects such as trees, branches, sticks, rugs, boards, animals, etc. present in the raw water of a surface water sources as a screen, protect pumps and other mechanical equipment, and to prevent the clogging of walls and other apparatuses. So screens are used basically for that purposes, which will remove the large suspended solids from the wastewater. The bar screens may be of जो आपकी जो screens हैं, it may be a coarse or it may be a fine screens, ठीक है. The bar screens may be a coarse, which is 2-4 inches opening, or fine, that which have 0.75 to 2 inches opening. The bar screens may be manually cleaned or mechanically cleaned. Typical amount of screening that is equal to 1.5 10 raised to power minus 5 meter cube per meter cube of the sewage. Screenings are to be disposed of either by landfill or incineration process. So coarse screens are basically, they are also known as racks. The spacing between the bar is 50 millimeters and more than this. The screen help in removing the large floating objects from the sewage. The material separated by the coarse screens consists of rugs, wood, sticks, and paper, which will be collected and disposed of by incineration or dumping in the landfill sites. Screen rods, जो आपके core screens हैं, that consist of parallel iron rods placed vertically or at a slightly slope of about 2 to 10 centimeters center to center. The core screens are also now normally kept inclined at an angle of 45 to 60 degree as shown in this figure. So the purpose of making the screens inclined is to increase the opening area to reduce the flow velocity and thus making the screens more effective. A velocity of wastewater through screens should be more than 0.8 to 1 meter per second. The material which is collected on the upstream side of the screen is removed either mechanically or manually. So जो भी material आप collect करेंगे वो आपके इस platform के ऊपर आप इसको collect कर सकते हैं. You can collect it by manually or you can collect by मैकेनिकली भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पर जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपके पास स्क्रीन्स हैं, ऑन द टॉप आपके पास ये स्मॉल बिगर पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इसको मैनुअली भी क्लीन कर सकते हैं. और मैकेनिकली क्लीनिंग नॉर्मली होती है लार्ज प्लांट्स में, जहाँ पर mechanically operated racks will manually clean is done at some plants with a hand operated racks. ठीक है ना, hand operated racks से भी आप इसको clean कर सकते हैं. स्क्रीन के कुछ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास स्क्रीन्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है. द फर्स्ट गाइडलाइन इज़ टू यूज़ द 2 बार रैक्स एट लीस्ट. ठीक है, आपने 2 बार रैक्स यूज़ करनी है, डिज़ाइन करनी है. इसका पर्पज़ ये है कि जब भी आपके पास कोई स्क्रीन्स आपने स्टॉप की हुई है इन फॉर द पर्पज़ ऑफ क्लीनिंग, तो आपका जो वेस्ट वाटर है वो दूसरी स्क्रीन से पास हो
ठीक है. So use 2 bar racks at least, each designed to carry a peak sewage flow. Maximum allowable head loss is 15 centimeters. So जब आपका head loss 15 centimeter से ज़्यादा होगा, so you will stop the operation of screenings and you will clean your screens with the help of manual or with the help of mechanical equipment. The velocity through screen should be around 1.5 feet per second or 0.45 meter per second. If the velocity of flow decreases below 1 feet per second or slower, the grid will drop out of the flow and deposit in the screen chambers. अगर इनकी velocity 1 से कम हो जाएगी तो जितने भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं यानी सिल्ट सैंड के लिए वो भी आपके स्क्रीन पर डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे. ठीक है. और वो आपके इससे बेसिकली क्या होगा कि जो आपका हेड लॉस है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा, यानी आपके पास जो स्क्रीन का एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा फॉर द वाटर टू फ्लो इट, बिकॉज इट विल डिपॉजिट एट द डेप्थ ऑफ द स्क्रीन, सो इट विल रिड्यूस द एरिया फॉर द screen. So you should maintain your velocity between 1.56, which will allow the grid to be remain in the suspension. It will allow the grid to pass through the screen chambers. The second जो कि हम use करते हैं in place of screens, that is commutator. Commutator basically it's in some plant shredding devices such as commutators are installed as an alternative to screens. ये रिड्यूस करता है सॉलिड साइज को एंड दैट कैन एंटर द प्लांट विदाउट काजिंग मैकेनिकल प्रॉब्लम्स और क्लॉगिंग. चॉप सॉलिड्स आर देन रिमूव फ्रॉम द फ्लो इज सब्सिक्वेंट सेगमेंटेशन प्रोसेस. ठीक है. सो बेसिकली ये हमारे पास कम्युनेटर है जिसमें आपके बिगर पार्टिकल्स आते हैं और यहाँ पे ब्लेड्स लगे होते हैं. वो ब्लेड्स जो इन पार्टिकल्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम इसको सेगमेंटेशन प्रोसेस में रिमूव कर सकें. After the screens, the next process is in the grid chamber where all the grid particles will be removed. So grid involves sands, clay, eggshells, metal fragments and other similar material. Grill, if not removed, can cause following problems. Number one, it damages the pump and other mechanical equipment for the treatment units. It may accumulate in primary segmentation tank and clog the sludge lines. Number third, cause serious troubles in sludge digestion and is not benefited by secondary treatment because ये जितने भी ग्रेड हैं that is inorganic chemicals. It will not react with other particles. Ultimately ये जो भी आपके biological process हैं उसके process को ये कम करेगा, बैक्टीरिया के decomposition process में interfere करेगा. So we have to remove the grids before sending the water for the biological treatment. ठीक है. यहाँ पर जो हम secondary treatment करते हैं ये basically एक natural treatment process है, एक natural process है. ठीक है. इसमें हम कोई आप initiate नहीं करते, कोई chemical मतलब इस तरह से आप initiate कोई process नहीं करें, कोई chemical add किया, process reactions हो गया, pollutant remove हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. Secondary treatment या biological treatment is basically a natural process. So natural process को नेचुरली होने में जितने भी इंटरफेरेंस होंगे सो यू शुड हैव टू रिमूव दैट इंटरफेरेंस दैट द प्रोसेस कैन बी रन स्मूथली ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो डिज़ाइन बेसिस क्या है? द ग्रिड रिमूवल डिवाइसेस रिलाई ऑन द डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी between organic and inorganic solids to affect their separations. ठीक है. स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो है आपके ग्रिड रिमूव्ड होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए. Generally are designed to remove the grid size of a particle larger than 0.2 millimeters. वो तमाम particle will with the all particles settles with the settling velocity defined by a Stokes law as we discussed in the previous lecture in the segmentation process. That is the settling velocity is equal to V4 into G, that is specific gravity of the particle minus specific gravity of the liquid into diameter of the particle, drag coefficient और a particle parameter size. ठीक है. और scoured at the velocity. scoured का मतलब ये कि जो particle settle down हो जाए with the pressure जब आप दें तो वो दोबारा से suspension में आ जाए. So वो आपके particles remove होंगे by scoured होंगे at the velocity
of this velocity. To ensure the removal of a grit while permitting the organic matter which may settle to be resuspended by scour, the horizontal velocity should be close to but less than the scour velocity of the grit. ठीक है, स्कोरिंग वेलोसिटी का देने का पर्पस ये है कि आपने जो भी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इससे कम होनी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा होगी तो जितने भी पार्टिकल्स सेटल डाउन हुए हैं वो दोबारा से उनको रीसस्पेंड कर देगी और दोबारा से पानी में उनको हल कर देगी. सो टू अवॉइड द स्कोरिंग और रीसस्पेंशन ऑफ दैट पार्टिकल्स यू शुड keep the horizontal velocity should be close or less than the scouring velocity of the particles. So this is the picture of the diagram which have showing the different components of the grit chamber. ठीक है, so here the infiltrant enter in the grit chamber. यहाँ पर हमारे पास grit washer removals लगे हुए हैं. ठीक है, adjustable स्टील बैफल्स लगे हुए हैं जो कि फ्लो को मैनेज करते हैं ताकि वो फ्लो लाइक स्पीड से ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो ना आए, जितने भी सेटल ग्रिड पार्टिकल्स हैं उनको इफेक्ट ना हो. तो जो भी आपके ग्रिड पार्टिकल्स हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट पे कलेक्ट होते हैं. देन यू रिमूव दोज पार्टिकल्स बाय मूविंग द कलेक्टर ड्राइव. So this is the picture of a grit chamber in the industry in the wastewater treatment plant. So these are the outer areas जहाँ पर हमारे पास clear water जो है वो इस चैनल में collect होता है और फर्दर जाके इसको जो भी इसका डेस्टिनेटेड डिस्पोजल है वहाँ पर जाकर ये डिस्पोज ऑफ हो जाता है. डिज़ाइन गाइडलाइंस फॉर ग्रिड चैम्बर क्या है? दैट इज़ वेलोसिटी शुड बी बिटवीन 0.25 to 0.03 मीटर पर सेकेंड. डिटेंशन टाइम 40 to 60 सेकेंड्स हैं. लेंथ आपके ग्रिड चैम्बर का 10 to 20 मीटर्स होना चाहिए. क्लीनिंग इंटरवल 2 वीक्स. आफ्टर 2 वीक्स आपको अपना ग्रिड चैम्बर स्टॉप करना पड़ता है और उसको क्लीन करना पड़ता है. जो आपका जो ग्रिड चैम्बर है दैट इज़ डिज़ाइन ऑन अ पीक फ्लो, पीक सीवेज फ्लो, दैट इज़ पीक मैक्सिमम फ्लो. नॉर्मली हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ 2. उसका भी पर्पज़ ये है कि अगर एक यूनिट जो है वो मेंटेनेंस या रिपेयर के लिए स्टॉप है तो दूसरे यूनिट से आपके पर्पज़ फुलफिल हो सके. विड्थ और डेप्थ का रेशो 1:1 to 5:1, लेंथ टू विड्थ रेशो 3:2 to 5:1. सो दीज आर द डिज़ाइन क्राइटेरिया जो आपने फॉलो करना है टू डिज़ाइन द ग्रिड चैम्बर फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. So now after discussing the preliminary treatment we will discuss the primary treatment of the wastewater. So अब तक जो आपके वाटर में से जितने भी लार्जर फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं और जितने भी ग्रिड पार्टिकल्स हैं जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो रिमूव्ड हो गए हैं वाटर पे. Now you will send your wastewater for the primary treatment. So in the primary treatment we will use a segmentation प्राइमरी सेगमेंटेशन टैंक. बेसिकली जो हम ये डिस्कस कर भी चुके हैं वाटर ट्रीटमेंट में, यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफरेंट प्रोसेस है जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे. बेसिकली सेगमेंटेशन इज़ अ फिजिकल treatment process using the gravity to remove suspended solids from the wastewater. Solid particles enter in the turbulence of moving water may be removed naturally by segmentation in a still water of lakes and oceans. The basic function of the primary segmentation tank is to remove the soluble solids or about 40 to 70% of total suspended solids from the wastewater. It reduces the BOD on a secondary treatment unit since almost 60 to 80% of total BOD of municipal wastewater is contributed by suspended and colloidal particles. Between 30 and 45% of total BOD will be removed during this process. ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ साथ 30 to 45% आपकी BOD भी removed होगी from the segmentation process. अच्छा जी, प्राइमरी सेगमेंटेशन प्रोसेस का हमारे पास जो है वो प्रोसेस है. द फर्स्ट वन प्रोसेस ऑफ अ सेगमेंटेशन टैंक. Flow controlled reduced to that soluble solids fall to the bottom of the tank and lighter material rises to the water surface. Primary segmentation tanks are also known as primary clarifier. The layer of solids that settle out in sometimes referred as the sludge blanket.
solid that settle out in a primary clarifier must be removed or wasted periodically to the digestion process. Floating material is removed by a surface skimmer and are conveyed to the digestion process. So the first process where the removal of subsequent quantities of suspended solids, floating materials and material which will cause biochemical oxygen demand in a wastewater flow occurs. Segmentation may be designed in a rectangular or a circular which will operate on a continuous flow through basis, yet they maintain relative to permit sustainable solids to settle if the specific gravity is greater than that of the water or to float in a specific gravity is less. ठीक है, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्राइमरी एफिलेंट इज डिस्चार्ज ओवर द टैंक एफिलेंट वायर. Removal of suspended solids and BOD is based on surface overflow rate and detention time. Surface overflow rate and detention time is basically the parameter which will define the removal of suspended solids and BOD in the segmentation tank. Segmentation tank जिसमें हम ऑलरेडी पीछे भी ये डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डिटेंशन टाइम इज बेसिकली अ थ्योरेटिकल टाइम जिसके लिए वाटर या पार्टिकल्स विल स्टे in the segmentation tank. Detention time that is equal to volume of the tank divided by the rate of the flow. Detention times are usually specified on the basis of average flow unless otherwise stated. Flow through time क्या है? ये actual time taken by a fluid to pass through the tank. So basic detention time आपका theoretical time है जो आप calculate करते हो by the dimension of your tank. ठीक है, वेयर एज फ्लो थ्रू टाइम इज एक्चुअल टाइम जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में आपके ट्रीटमेंट प्लांट में जो फ्लूइड है वो पास थ्रू द टैंक. इट इज़ डिटरमाइंड बाय द ट्रेसर स्टडीज यूजिंग एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेगमेंटेशन बेसिन के जोन हमारे पास 4 जोन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इनलेट जोन, settling, sludge zone and outlet zone. So I will not discuss this in detail because we have already discussed in the water treatment segmentation process. So I have just provided the theory of the inlets of all the zones here. So the first inlet zone which we already discussed कि आपको inlet zones में different आप use करते हैं orifice baffles ताकि आपके पास smooth flow in आए ताकि आपके जितने भी particles आपके sludge zone में हैं वो दोबारा से scoured ना हो. Similarly settling zone वो particles जो settling zone की basis को touch कर देते हैं we consider it removed from the tank. So similarly these are the pictures of the outlets of a segmentation tank. So these similar slides हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आइडियल सेटलिंग टैंक के लिए हमें क्या क्या एज्यूम करना है. सबसे पहले हम एज्यूम करें कि हमारी प्लग फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है तमाम पार्टिकल्स की. Particles are removed when they reach the bottom of settling zone. Particles settle discretely without interfering from other particles at the depth. हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल एंटर होगा उसके 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल. ठीक है, सो जो वर्टिकल है उसको हम टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी और सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, और जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी वो आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी है. Then we already discussed about the critical settling velocity or a fixed settling velocity in the previous slides. यहाँ पर हमने ड्राइव किया था सरफेस ओवरफ्लो रेट का फार्मूला, और यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है वो हम कंसीडर करते हैं कि 100% रिमूव हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इनलेट साइज. और वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी क्रिटिकल पार्टिकल्स से कम है वो आपके पास रेशो में रिमूव होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इनलेट. ठीक है, सो ये दोबारा उसी चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है, वो सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है दे विल बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम 100%, और वो पार्टिकल्स जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है दे विल रिमूव इन द रेशो. यहाँ पर हमने रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ सेटलिंग टैंक को डिस्कस किया था. ये सेम स्लाइड है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन द सेगमेंटेशन टैंक जो हमने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पढ़े हैं. सो वही वाटर ट्रीटमेंट के लिए पढ़ा है. सो द सेम कॉन्सेप्ट विल बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. ठीक है, सो लेंथ विड्थ
So by increasing the depth, then there will be no effect on the removal. So retention time के लिए अगर आप depth को increase करेंगे तो आपके retention time के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और इफ़ वी इंक्रीज टी बाय चेंजिंग, हाँ जब हमने लेंथ इनटू विड्थ यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करेंगे तो आपके डिटेंशन टाइम के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा. सो व्हेन यू विल चेंज द रिमूवल एफिशिएंसी विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक. सो सिमिलर पिक्चर्स विल बी शोन ऑफ द रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक. डिज़ाइन क्राइटेरिया, अब मिनिमम 2 टैंक्स आपने यूज़ करने हैं. वाटर डेप्थ 3 to 5 मीटर्स है. डिटेंशन टाइम 2 to 8 आवर्स है. ओवरफ्लो रेट 20 to 33 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है. वेयर लोडिंग रेट लेस देन और इक्वल देन 250 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे है. स्लैट स्टोरेज 20% एक्स्ट्रा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है. सो डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर अ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर रिटेंशन टैंक इज गिवन बिलो. So ये आपके पास सर्कुलर टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड दीज आर द पिक्चर्स फॉर सर्कुलर सेगमेंटेशन टैंक. और ये आपके पास वर्टिकल रेक्टेंगुलर सेगमेंटेशन टैंक की. Let's perform one numerical related to the design of grid chamber. A suspension containing the particles of a grid with a dia of 0.2 millimeters and specific gravity of 2.65. For particle of this size, the drag coefficient is 10, B constant is 0.06, and F is 0.03. The suspension also contains the organic solids of the same size for which the specific gravity is 1.10, and F and B are the same. Determining the settling velocity of the grid and scour velocity of both grid and organic particles, select the horizontal velocity for the basin. ठीक है. सो आपके पास diameter given है, specific gravity of a grid chamber is given, drag coefficient B, F is given, specific gravity of organic particle is given. You are asked to find out the settling velocity of the grid and find out the scouring velocity of both organic or inorganic material. So as we know the formula for a settling velocity, which is given. So we have all the components. So first you will perform for a grid chamber. The settling velocity will be equals to 0.026. Similarly, you should also for calculating the scouring velocity of the grid, you will use the formula and put all the values in the formula, and you will get the horizontal scouring velocity of both grid and horizontal of the material. Similarly, steps will be performed for calculating the scouring velocity for the organic particles. So after calculating the ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा होगी हम उस हॉरिजेंटल वेलोसिटी को जो है वो सेलेक्ट करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ द ग्रिड चैम्बर. ठीक है. So now the next numerical is to design the grid chamber for the treatment of municipal wastewater. The average sewage flow rate is 0.5 meter cube per second and the peaking factor is 2.75 B or F and drag coefficient is given, and assume the other design criteria which is given in the table. सो ये डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है. थोड़ा सा उस लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने सिर्फ स्कॉवरिंग वेलोसिटी और सेटिंग वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट किया था. इसमें अब आपने सब कैलकुलेट करना. सबसे पहले तो आपने अपने जो स्टेप्स हैं, सब यहाँ पर मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है बिकॉज आई वांट कि आप इसको खुद परफॉर्म करें. सो यहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स जो है वो मेंशन कर दिए हैं. सो आई होप कि आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे. The first step is to calculate the peak sewage flow, simply multiplying the average sewage flow rate with the peak factor. ठीक है. यानी 0.5 को आप multiply करेंगे 2.75, you will get the peak sewage flow. After that you will assume the 2 units and calculate the flow for 1 unit. Then you will assume the velocity of flow in a chamber from the design criteria which is given in the previous slide in the table, and then you will calculate the area of the chamber by considering the velocity of the flow in the chamber. Then you will take depth into width into depth ratio, जो कि हमने 1:1 पढ़ी थी. आप कुछ भी वैल्यू चूज़ करेंगे and you will calculate the width and depth of the grid chamber. After that you will calculate the length of the grid chamber. So for calculating the length of the grid chamber, I am sharing you one example that how we can calculate the length of the grid chamber. So first of all you know that जो आपने particle size remove करना है, it should be 0.2 millimeter to be removed. स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि सॉरी जो एग्जाम्पल
स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 है। सबसे पहले तो आप उसकी सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग अ स्टोक्स इक्वेशन। आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट द टाइम ऑफ द पार्टिकल टू सेटल अ डेप्थ ऑफ 0.31 मीटर। सो जो डेप्थ आपने कैलकुलेट की है वो डेप्थ को कवर करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा वो आपने कैलकुलेट करना है। दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द ग्रेट चैम्बर डिवाइडेड बाय द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो जो भी आपने डेप्थ आपने कैलकुलेट की होगी आपके न्यूमेरिकल में जो आई होगी वो आपने पुट करनी है। यहाँ पर मेरे एग्जांपल में जो डेप्थ आई है दैट इज़ 0.31 है, जिसको मैंने पुट किया है, और मेरी सेटलिंग वेलोसिटी इस न्यूमेरिकल में 0.01 6 मीटर पर सेकेंड आई है। सो आई कैलकुलेटेड द टाइम विच इज़ जो कि इक्वल है अप टू 15 सेकेंड्स। उसके बाद हमने हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपने जो भी एज्यूम की है, मैंने इस न्यूमेरिकल में 0.3 एज्यूम की है। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द हॉरिजेंटल ट्रैवल ऑफ द टाइम विच इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t, that is the time of the particle to cover the depth of 0.1 meter. So I will calculate the horizontal travel of a particle, that is 4.5 meter. Then you will add 20% as a factor of safety, that is 5.5 meter cube. The length of the red chamber जो है वो आपकी horizontal length जो है वो आपके पास 5.4 मीटर आ जाएगी। तो similar आपने परफॉर्म करना है अपने न्यूमेरिकल के लिए टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ग्रेट चैम्बर। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं फॉर द डिज़ाइन ऑफ अ सेगमेंटेशन टैंक। मैं इनको यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं दे रही और कोई भी आंसर्स नहीं दे रही, बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वाटर ट्रीटमेंट में। थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि वो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ पर आपको सीवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला आप इसको सॉल्व करें एंड देन वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स इन अ क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी डिस्कस कर सकते हैं। और एज यू आई टोल्ड यू कि मुझे आपने सॉल्व न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपने मुझे भेजने हैं, सो आप मुझे सेंड करें। आई विल आल्सो see your solution and mark them and send you a corrected ones. So these are up to 6 numericals जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर given है just to design the segment settling tank. Thank you.